let us begin with our class for today, and we will be studying about the volume of cylinder in this class. Volume of cylinder. Now many cylindrical shape you have seen around you. तुमने बहुत सारी shapes देखी हैं. जब हमने बात की थी CSA और TSA, when we were talking about this one, CSA and TSA of cylinder, तब भी हमने cylindrical shapes के बारे में discuss किया था. Now the same thing we will be discussing about you. You have seen different kind of cylindrical shapes around water you. tank. Yeah, yes, like water tank you can say. The other one is water bottle you are having. Okay. Then the road roller. Okay, all these are of cylindrical shapes, na? So you have seen around you and cylinder at your home, gas cylinder, है ना? So all these things, and a pipe, the best example, a pipe through which water runs, है ना? That is also in cylindrical shape. So different kind of shapes you have seen around you. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, like a wire I can say, है ना? A coin. So all these are of which kind of shape? These are of cylindrical shapes, ना? So we have already discussed about CSA and TSA, curved surface area. Do you remember? हमने discuss किया था ये. Anyone? What is the CSA and what is the TSA of a cylinder? If I am having a cylinder, suppose this is the cylinder I am having, okay, and yes, this is the cylindrical shape object I am having, any cylindrical shape. So if I am finding its CSA, Presentation if is it, not Presentation is visible, not sir. 2 pi r. okay, the thing is, if we are talking about CSA of a cylinder of height h and radius r, then CSA is 2 pi rh, that's correct, and TSA 2 pi r and in bracket r plus h. That thing we have already discussed. हमने डिस्कस किया था ये कि अगर हम सिर्फ इसके साइड्स एरिया को फाइंड आउट करते हैं, दैट इज द CSA, एंड इफ वी आर इंक्लूडिंग द टॉप एंड द बॉटम ऑल्सो, दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग TSA. नाउ वी विल बी कमिंग टू द वॉल्यूम सेक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर. अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम में क्या है, सी हाउ मच वी कैन स्टोर इनसाइड इट, कितना हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज द वॉल्यूम. ओके, सो व्हाट इज द कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी कितनी है. सी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट्स फॉर्मूला, पहले मैंने बताया भी था एक बार. इट इज पाई आर स्क्वायर एच. If you are finding the volume of cylinder, it is pi r square h. And how it has become pi r square h, why this formula is there? See, for anything, if we are finding the volume, see this surface area, if I am finding the surface area of the bottom part, बिल्कुल सबसे नीचे वाले part को की shape को देखो, how it look like, कैसे दिखाई देता है वो. If I am talking about the bottom part, it is a circular shape, ना. So if I am finding the area of this bottom part, it is what, pi r square. Are you getting? See, जैसे हमने क्यूब और क्यूबॉइड के केस में किया था. सी अगर हमारे पास यहाँ पे एक क्यूबॉइड है, if we are having this one cuboid, okay, now this is the length, this is the breadth. If I am finding the bottom's area, ये जो bottom area है ना इसका, if I am finding this floor or bottom area, what it will be, length into breadth, na? Yes, sir. Okay, and then what we are having, see this is the height. So if I am multiplying the surface area, the bottom area, see this is the bottom area, है ना. If I am multiplying the bottom area by height, what I will get, अगर मैं bottom area को height से multiply करता हूँ, what I will be getting, I will be getting the volume, ना. This thing I will get or not, I will get some volume. The same thing, if I am multiplying Yes, sir. the surface area, this bottom area is what, a cylindrical shape. If I am multiplying it with the height, see ऐसा हो सकता है ना, जैसे मेरे पास एक coin है, this is one coin, now I am keeping one another coin above it, then one coin above it, then one coin,
सी आई एम पुटिंग सम कॉइन्स अबव वन एंड अदर, ऐसे कॉइन्स रखता जा रहा हूं मैं. सो if I am having the surface area of one coin and I am multiplying it with height, will I get the volume of the cylindrical shape? I will get it. Volume मिल जाएगा. Volume is what? In a three-dimensional shape, if we are multiplying the bottom area to its height, then we are getting what? Volume. So volume is what? It is pi r square h. This is what we are getting. Just check it how much we are getting the answer. I hope I will have. 770, sir. Okay, 770. Someone has given the answer. Okay, let's check it. So if we are having the radius, suppose this is the okay, the radius is 7 centimeter and height, now I will be taking, see 10 centimeter is the complete height, but I need only half of the glass of water, so I will take height 5 centimeter. So when I will find the volume, it will be 22 upon 7 multiplied by r is 7 and then 7 and then 5. Okay, so it will be 7 to 7 cancel out, 22 5 is 110, 770, and what will be the unit here? Centimeter Cube. cube. Okay, that I already told you, when you are putting the volume unit na, it should be in cube, वो cube में आना चाहिए. Okay, if you are finding area, it should be in square. So now we are having a question. Suppose I am giving you one cylindrical thing. See, suppose this is the cylinder we are having. Okay. One cylinder we are having like this. Okay, and I am saying the circumference of its base, circumference of its base is 132 centimeter and its height, this height is 25 centimeter. So what will be its volume? Volume कितना आएगा इसका? If I am saying the circumference of its base is 132 centimeter and height is 25 centimeter, what will be its volume? First we will be using 2 circumference. pi r. Yes, it is 2 pi r 2 pi because r. see the base is in which shape? Base is in circular shape. When you are talking about a cylinder, you know the base is always in circular shape and circle ka circumference. The formula to find the circumference of circle is 2 pi r. So it will be equal to 132. So 2 multiply 22 by 7 multiply r will be equal to 132. Now we will calculate r equal to 132 multiply by 7 upon 2 multiply by 22. So 2 से cancel करेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 22, 1 जा 22, 3 जा. So r we are getting how much? 21 centimeter. Now what will be the volume? You know the formula to find the volume, it is pi r square h. So that means it will be 22 by 7 multiply by 21, 21, and then height is 25. So 7 3 ja 21, then it will be 22 3 ja 66 multiply by 25 1 ja 25, 25 2 ja 50, 5 2 5. We will multiply 5 to 5 by 66. So 6 5 ja 30, 3 6 2 ja 12 plus 3 15, 1. Then 6 5 ja 30, 31 multiply 3150. So 0 5 6 4 3. So we are getting 34650 centimeter cube. This is what we are getting as the volume. Okay, one question is there. If you are having a cylinder, suppose again you are given with a cylinder. Sorry. This is the cylinder you are given with. Okay, and this time you are given with the area of the base.
suppose base area of the cylinder is given, suppose it is given as 100 centimeter square and its height is given 25 centimeter. Now what will be its volume? अब वॉल्यूम क्या आएगी अगर हमारे पास एक सिलेंडर में बेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हाइट 25. दिस इज द थिंग, सी वट एवर इज द बेस एरिया, जो भी हमारे पास ये बेस एरिया है ना, हम इसको हाइट से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, दैट विल बी वॉल्यूम. देखो एक चीज सोचो, मैं अगर तुम्हें कहता हूं आई हैव गिवन यू दिस मच एरिया, ठीक है, टू स्टोर, मैंने बोला कि मैं तुम्हें ये वाला एरिया दे रहा हूँ कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए, वो चीज़ तुम्हें स्टोर करनी है सिलेंड्रिकल फॉर्म में. देखो अब एरिया क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ इतना ही दिया है, दिस इज द एरिया आई हैव गिवन, सो दैट मीन्स व्हाट, यू कांट कीप योर थिंग आउटसाइड दिस एरिया. इस एरिया के बाहर तुम अपनी चीज को नहीं रख सकते. यू विल कीप योर थिंग्स वेयर, on this area only, so that means you are increasing what, height, and when height will increase, see area is there and height will increase, that means the thing will be what, three dimensional हो गया, and then you can find the volume by multiplying this area with the height, whatever the height will be, उससे मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम मिल जाएगा. सो बेस एरिया को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो हाइट से, इट विल बी व्हाट, 2500 सेंटीमीटर cube, that will be the answer. Okay, see, now just see if we are having a bigger cylinder, हाँ हमारे पास एक बड़ा सिलेंडर है, suppose this is the cylinder I am having, okay, so now what to do, ये हमारे पास एक बड़ा सिलेंडर है, दिस इज द बिग वन, एंड रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड हाइट इज, सपोज इट इज 20 सेंटीमीटर, हाँ 20 सेंटीमीटर इज द हाइट एंड रेडियस इज दिस वन, एंड वी आर हैविंग वन अदर स्मॉल ग्लास लाइक दिस, छोटे छोटे ग्लासेज हैं हमारे पास, द रेडियस इज 3.5 centimeter and height is 5 centimeter. So how many glass of water or how many glass of this quantity we can fill from this container? अगर ये पूरा container if it is filled with water or milk, you can take filled with milk, how many glasses of milk are there of this size? हाउ मैनी ग्लासेज, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितने ग्लासेज, हाउ मैनी ग्लासेज ऑफ वाटर वी कैन फिल. सपोज दिस इज द टैंक वी आर हैविंग एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, अ ग्लास. सो हाउ मैनी ग्लासेज ऑफ वाटर, ऑफ मिल्क, हाउ मैनी ग्लासेज ऑफ मिल्क वी कैन फिल from the tank. कितने ग्लास फिल कर सकते हैं? You can do one thing, see if you are finding the number of glasses, you know you have to divide the volume of the bigger one by the volume of smaller one to find the number of glasses. So it will be volume of tank divided by volume of glass. So if you are finding the volume of tank, you will use pi capital R square capital H. I am using capital R and capital H to represent the radius and height of this tank. Okay, and I will use pi small r square small h, small r for the radius of this glass and small h for the height of this glass. Okay, so that means pi to pi we will cancel out. R square, what is r here? It is 21 multiplied by 21. Then what is the height? 20 then what is the radius of the glass? It is 3.5. then 3.5
then height is what, it is 5. okay, now cancel it out. पहले decimal remove कर लो. See, we are having decimal, 3.5 is there, we will remove this decimal, we will multiply by 10, again we will remove this decimal, so we will get one more 0. Now we can cancel. 5 1 ja, 5 4 ja 20, 7 3 ja 21, 7 5 ja 35, 7 3 ja 21, 7 5 ja 35. Now cancel out. 5 2 ja 10, 0, then 5 1 ja, 5 4 ja 20. So that means how much we are getting? 3 3 ja 9, 9 4 ja 36, and 36 multiply by 4. So it is 4 6 ja 24, 4 3 ja 12 plus 2, 144. 144. So that means we can fill 144 glasses of milk. इतने ग्लास हम फिल कर सकते हैं from this tank. We can easily find it by dividing the volume of the complete tank by the volume of this glass. If we will divide, then we can find. Okay, let's see this one. Okay, this is the question. I think you can see this one. The capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liter. How many square meter of metal sheet would be needed to make it? If we are finding the capacity of a closed cylinder, see here it is written the capacity means volume is given to us and height is given. So if I am making a cylinder, suppose this is the cylinder I am having, okay, its height is 1 meter, जो height है वो 1 meter है, and its volume is 15.4 liter volume, it is 15.4 liters. बट यू नो वन थिंग, तुम लोग एक चीज़ तो जानते हो कि वेन एवर वी आर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम, आइदर वी गेट आवर आंसर इन सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, क्या कभी हम लीटर्स में अपना आंसर करते हैं? सो दैट मीन्स व्हाट, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, इनमें से किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो हाउ वी विल बी कन्वर्टिंग इट टू सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब? कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको, आइदर इन सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब? If it is given in liters, volume is given in liters. If we are having 1 meter cube, it is equal to 1000 liters. And you know what? 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. That means either you can convert it into a liter to meter cube. Meter cube में करोगे तो it will be in decimals. वो decimals में आएगा because we have to divide by 1000. And if we will convert it into what? Centimeter cube, it will be in what? Without decimals. So we will convert in centimeter cube only. Okay, so we will find the volume will be equal to 15.4, multiply it with 1000. How much it will be? 15400 centimeter cube. That much. When we will multiply 15.4 को जब हम multiply करेंगे by 1000, it will be that much. But see one thing, the height is given in meter, है ना, 1 meter. So we have to convert it in also in centimeter. So how much it will be? If I will convert this, 100 centimeter. Yes, it will be 100 centimeter. Now I will use the formula of volume. मैं volume का formula find out करता हूँ. So volume का formula क्या होता है? Pi r square h. So that means it is equal to 15400. And see, pi is 22 by 7. Then radius we have to find. Height is given to us, so it will be equal to 154 and 00. So r square will be equal to 15400 multiply by 7. See, this 7 will go into multiplication, this 22 and 100 will come into division. So this 0 and this 0 are cancelled, है ना, 2 zeros are cancelled, 22 1 ja, 22 7 ja, 22 7 ja 154. So r square we are getting 49. So what will be r then? R क्या आएगा? It will be 7. Well, है ना, because r square is 49. So we will do the square root. So r will be 7 centimeter. So we have got the radius now. Radius हमारे पास आ गया. It is 7 centimeter.
So the thing is, now we need to find the area of the square sheet, area of the metal sheet जिससे ये cylindrical tank बना है. So we will be using TSA or CSA. TSA. Yes, we will be using TSA because see, it is written that it is a closed cylindrical vessel, closed cylindrical. So we will be using TSA. So that means it is what? 2 pi 2 r pi bracket r r plus h. bracket 2 h pi plus r. r. Yes, that's correct. So we will write 2 into 22 by 7 multiply by r is 7, then h is 100 plus 7. So it is 7 to 7 cancel out, 22 to the 44, multiply it with 107 and you will get your answer. 4 7 ja 28, 4 1 ja 4, 4 to 8, 8 10, then 4 plus 2 6 7 4. So you are getting how much? 4708 centimeter square. Now see, we will not leave our answer in centimeter square. क्यों? Because our height in the question is given in meter, so we will change it to meter. So if I have to change this one 4708 centimeter square to meters, अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, by which number we will divide? 100. बेटा 10,000 100. एक दिन पहले भी बताया था. बिकॉज 1 मीटर इज 100, बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्क्वायर तो हम दोनों साइड क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं ना. सो वी विल डिवाइड इट विथ 10,000. सो इट विल बी हाउ मच? 0.4708 मीटर स्क्वायर. दैट इज द आंसर. यू नो ना वाई आई एम डिवाइडिंग इट विथ 10,000. इससे डिवाइड क्यों किया है मैंने 4708 को? क्योंकि देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दैट मीन्स आई विल बी टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड. सो 1 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. Okay, this is, if we are having, suppose this is the activity type I am saying. If I am having a cylinder, suppose this kind of let's make a cylinder. This is the cylinder I am having. Okay, this cylinder. If I am opening it, opening means I am cutting its one surface and then I am rolling it, then which kind of shape I will find? जैसे रोल करने पे सिलेंडर बना है. There are 2 circles and rectangles. If you are having this one, this cylinder, and you are opening it from where? You are opening it parallel to its height. हाइट के पैरेलल अगर ओपन कर रहे हो, दैट मीन्स इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, द एक्टिविटी, जस्ट टेक अ पेज ऑफ योर नोटबुक. ओके, पेज ऑफ योर नोटबुक. दिस इज द एक्टिविटी you have to do. All the steps I am writing here. Measure its length and breadth. Measure the length and breadth. ओके, एक पेज लेना है नोटबुक का, वो कुछ इस तरह का दिखेगा. उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को मेजर करना है. देन रोल इट इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर. और रोल कुछ इस टाइप से करना है कि जो ये वाला जो पार्ट है ना, दिस विल टच दिस वन, है ना, बस वो टच करे, उसके ऊपर वो उसको कवर ना करे. हाँ, सो दैट इट शुड नॉट कवर. जस्ट रोल इट लाइक दैट इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. ओके, सी यू आर हैविंग द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पेपर. लेंथ और ब्रेड्थ है तुम्हारे पास पेपर की. सो फाइंड इट्स एरिया. यहाँ पे इसका एरिया फाइंड आउट करना है. Okay, find the area of this one. If you are having the length and breadth, find the area of the rectangle. Rectangular पेज का एरिया फाइंड आउट कर लेना है. फिर तुमने क्या किया? रोल इट इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर की फॉर्म में रोल किया.
आइदर यू कैन रोल इट ऑन फ्रॉम इट्स हाइट, सॉरी जो ब्रेड्थ था ना, देखो ब्रेड्थ वाली साइड से भी रोटेट कर रोल कर सकते हो, या फिर लेंथ वाली साइड से, लाइक आई विल शो यू। ओके, अब सिलेंड्रिकल फॉर्म में जब तुमने उसको रोल कर लिया, देखो अगर तुमने ब्रेड्थ वाले पार्ट को मैच किया है, अगर ब्रेड टू ब्रेड, देन जो ये ब्रेड्थ है ये क्या बनेगा, व्हाट इट विल बी, ये जो ब्रेड्थ है व्हाट इट विल बी, हाइट सर। it Height, will be sir. height, correct, it will be height, and what this length will be, जो ये length है वो क्या बनेगा, सर्कमफरेंस। The circumference yes, of the circle. that will be the circumference of circle, जो बेस होगा ना सिलेंडर का बेस, वो जो लेंथ है उसका circumference बनेगा, that is correct. So now by using the circumference of base formula, that means 2 pi r, ओके ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और इक्वल रखना है किसके, इक्वल टू लेंथ, लेंथ को इक्वल रखना है उसके, और यहां से क्या वैल्यू मिल जाएगी, व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर, रेडियस। you will get radius. Now you are having the height, now you are having the radius, दोनों चीज हैं तुम्हारे पास, you are having the height, you are having the radius, find the CSA, CSA find out करना है, okay, of this cylinder by using the formula, क्या formula है CSA of cylinder, 2 pi r h, okay, this formula you will use, 2 pi r h. You are having the radius, you are having the height, and match your answer, ये answer you have to match your answer whether this CSA, जो तुम्हारा ये CSA है, whether it is coming equal to the area of that rectangle, क्या वो उसके equal आ रहे हैं, try to find, okay, this is the activity you will be performing, ये वाली activity तुम लोगों को करना है।